In the name of Allah, the most merciful, most gracious, and most beneficent. Prophet Muhammad said, peace and blessings of Allah be upon him. One who is not merciful to others will not be treated mercifully. Now today, I will deliver another lecture for class 10th reproduction, and today's topic is placenta. Placenta. Shabash. What is placenta? The placenta is ancho. It's a Latin word placenta and manigo, a flat cake. Flat cake. In a placenta is ancho. A placenta cho ak connection akasan, ak bridge akasan between the mother and the fetus. It is the connection between the mother and the fetus. Maash the bachas darmiyan is connection jo asan, bridge jo asan, that is called placenta. Okay. So you say placenta cho, it is fully formed in 10th week of pregnancy. 10th week of pregnancy. In a dahan haftan tanchi fully banani placenta. In each placenta suli heaven banan. Dahan haftan tanchi complete gasan. The hafta ge direct tanchi complete gasan placenta. Taimi is a direct या गोडनिक ट्रिमिस्टर च गोडनिक तरह उदान च वारिया खतरा आसन मिस बच्चस एवर्शन गसनुक तम पछ मिस प्लेसेंटा फुली गसन डेवलप तम पछ मिस नरिशमेंट तरन फ्रॉम द मदर त लिहाजा कर पछ चांसेस कम आसन या सही एवर्शन गसनिक ओके तो सवाल इस प्लेसेंटा छु अत जो स्ट्रक्चर आसन प्लेसेंटा structure of placenta. ये placenta is ancho, icha asan. It is reddish brown in color. Icha reddish brown in color asan. Okay. The bicho it is size is equal to dinner plate. Its weight is 1 kg. In each reddish brown in color asan. I'm size asan equal to dinner plate. The bicho wazan asan 1 kilogram. Okay. Shabash. Yere isko asan here. Placenta. Placenta. It's an umbilical cord. It's a chorionic villi. Ego chorionic plate. This is placenta. So when you say confusion shouldn't bachan mas. So go ashwana is in a stone placenta. This is not placenta. Achana umbilical cord. Placenta should margin side asan. The ichi janamano asan ye placenta. Ichi asan margin side ichi asan bajas kun connect karit kapurkin through umbilical cord. Okay. Shabash. Then lekho is placenta is connected. Placenta is connected with umbilical cord. Ichi umbilical cord as kun connect asan karit.
सो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग umbilical cord गो लिहाजा कर यह प्लेसेंटा यह यूट्रस साइड यह umbilical कॉर्डस कुन जुड़ित मगर umbilical कॉर्ड ज्यूठ यह बच्चे साइड umbilical कॉर्ड ओके लिहाजा कर टोन दिस इज नॉट प्लेसेंटा दिस इज umbilical कॉर्ड ओके तो वही सवाल प्लेसेंटा यह प्लेसेंटा बनियोमुत 6 टिश्यून हुंद प्लेसेंटा is formed of 6 tissues यह 6 टिश्यून हुंद बनियोमुत तथ मन 3 fetal tissues 3 fetal tissues and 3 maternal tissues अथ मन 3 fetal tissues 3 maternal tissues यानी प्लेसेंटा 6 टिश्यून बनियोमुत 3 fetal 3 placental ओके शाबाश वही सवाल मैंने सपोज fetal tissues कुछ fetal tissues fetal tissue मन fetal epithelium fetal epithelium ब्याक गो fetal connective tissue तो ब्याक fetal endothelium यमन 6 टिश्यून 3 टिश्यून fetal tissues fetal tissues 3 fetal epithelium fetal connective tissue and fetal endothelium ब्याक गो maternal tissues tissues 3 तथ मन uterine epithelium ब्याक गो uterine connective tissue तो uterine endothelium ओके गो प्लेसेंटा 6 टिश्यून हुंद बनियोमुत 3 fetal 3 maternal fetal tissue 3 fetal epithelium fetal connective tissue fetal endothelium तो maternal tissue 3 uterine epithelium uterine connective tissue तो uterine endothelium ओके वही सवाल इस ह्यूमन प्लेसेंटा अगर इस वो ह्यूमन प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटास मन 3 fetal tissues तथ मन कहीं ते maternal tissue कहीं ओके यानी तो लिखो in human placenta all the 3 maternal tissues get lost तम रोजन कहीं यह ह्यूमन प्लेसेंटा तथ मन 3 maternal tissues लॉस गसन को तथ मन खाली 3 तम गई fetal tissues ओके अगर तो डायग्राम के जरिए हो सपोज ये मानो fetal epithelium ये गो fetal endothelium सॉरी uterine epithelium suppose uterine epithelium you go fetal epithelium you go fetal connective tissue you go uterine connective tissue you go fetal endothelium suppose you go fetal endothelium you go fetal connective tissue you go fetal epithelium so you can go your uterine epithelium you go uterine connective tissue
your uterine endothelium. Okay. Yum gayas you three tissue, yum gay fetal tissues. Yum gay fetal tissues. The yum three tissue gayas maternal tissues. Maternal tissues. This is the structure of placenta. General placenta. In the yad as placenta show tissue asan. Fetal endothelium, fetal connective tissue, the fetal epithelium. Yum gay fetal components. But the uterine side, maternal side, so uterine epithelium, uterine connective tissue, and uterine endothelium. When human placenta human placenta much internal tissue asan ki humne khali asan fetal three tissues. Okay. So this is one structure of placenta. Okay. One per सवाल इधन ये placenta चु बनन किस कुछ है हाँ इधन चीज़ पाकन मैट्रिक्स स्टैंडर्ड्स में formation of placenta किस कुछ बनन shortest में वन कुछ बनन placenta ये चु basically कैसन काम ये zygote चासन या blastocyst चासन ये जो finger like projections दिमाग में chorionic villi in the win high placenta was chorionic villi. Tim chorionic villi penetrate gasan into is an uterus wall chasan as much depression as asan. Timanch one cryptus. Timni must him penetrate gasan. Pachu im chorionic villi is an eroded uterine wall chasan. This must him fuse gasan. The banantim placenta. I think likewise in a blastocyst. In a zygote blastocyst and sat blastocyst gives finger-like projections. Finger-like projections called chorionic villi. Dimension chorionic villi. Blastocyst divan finger-like projections called chorionic villi. Tim kochi gasan which penetrate into corresponding depressions of uterine wall called cryptus. Uterine wall much depressions asan cryptus. Timni much penetrate gasan yum finger-like projections called chorionic villi. Pate gasan kam patchim chorionic villi karan kam yum fuse gasan chorionic villi fuse with eroded uterine wall and form placenta. Branches placenta. You see placenta at Benu, formation of placenta is called placentation. Formation of placenta is called placentation. Okay. Short as month here, yaad matrix standard as month. So go. You should have come using zygote chasan blastocyst stages. Even finger-like projections called chorionic villi. Timchi penetrate gasan into depressions of uterine wall. Uterine wall much depression banan. Timach banan cryptus. Timni must penetrate gasan. Pachim chorionic villi fuse gasan. Using uterine wall chasan. Asan erosion asan logmut. Asan cryptus asan benimi. That much is eroded uterine wall asan ya eroded mucosa asan also shear alan to ye banavan kya placenta. Okay, so this placenta banyo as process chwana placentation. Is I one placenta banan kuis kalas dahan haftan madine dayan datan machi complete gasan. Okay, this is the formation of placenta. What is MG function kya hai? Functions of placenta. Shabash.
merit standards man she istam pakan ilte 12th as voidu to put classification ach response classification placentas. So that part you will study in class 12th. Okay. Moi sawal placentas ne asai kya che function. Godnichi function che. It helps in the transport of food from mother to fetus. It helps us in the transport of food from mother to fetus. It moch gaza khaw pachu maj man gasan gaza digestion goyi khonas mans pachu placenta kin taran ta watan baisin this khonas mans go lihaza kare chi taran kapore chu placenta kin taran go placenta chu food current transport from mother's blood to fetal blood. Okay. Number it helps in the transport of gases between the mother and the fetus. Transport of gases between the mother and the fetus. More charge oxygen. You want lungs and but go you conas per diffuse. But she cone pet your oxygen taran plus and taking doesn't bice this conas. It bice this conas must go yes a year oxygen. Torch near and carbon dioxide. So should deny plus and taking even both margin this conas month. But you margin the respiratory system can never near. The has a attention role current cause placenta. Number next, it helps in the transport of wastes from fetus to mother. Okay. Shabash. Bachas ma bani mai waste. The waste ko ch gasan. Tim ch baisin khone per taran placenta ki void margin this conas mas. The margin khone per ch patim gasan kya out through excretory system. Go lihaza kare chi transport kar wastes de. Shabash. The number next chi karan kam it helps in the transport of antibodies from mother to fetus and protect the fetus from disease. Protect the fetus from disease. Shall I try to understand? Maji this conus manche antibodies. Then antibody ch placenta kin cross kasan. Watan ch bais this conus mans. It bais this conus mans was antibodies. Tai tim bachas bachavan kam nish infection nish. Kes bachas ch wini asan panun immune system kehin. Go imi ch moji karan provide antibodies. To ch bachan yasa ye bacha kam nish disease or nish infection nish bacha. Number next, it acts as a temporary endocrine gland and produces following enzymes. Okay, Yishikaran Kumi placenta. Yishkaran act as a temporary endocrine gland. Endocrine gland go to gland is hormone ke release. Tafne endocrine gland. Magar ish temporary. Kes delivery patchun pat rozani placenta ki time ish temporary. Time kom hormone chniya. Amos niya solar hormone chman niya. Imzan mitar manta hai bo. Geometric standard. Gorde kuch niya estrogen. Is an estrogen near placental estrogen. So just karan ko
सह एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इस प्रेगनेंसी दौरान यूट्रस एनलार्ज गसान यह एस्ट्रोजन हार्मोन यह एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनलार्ज गसान यूट्रस एनलार्ज गसान नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा मज यह प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन यह मेंटेन प्रेगनेंसी यह मेंटेन प्रेगनेंसी त्रीम क्या गो HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनोट्रोपिन HCG ब्या हार्मोन प्लेसेंटा मज यह मेंटेन थवान कार्पस ल्यूटियम फॉर द कंटिन्यूड secretion of progesterone. It maintains corpus luteum for the continued secretion of progesterone. Okay. तह पड़ो यह ओवरी मज कार्पस ल्यूटियम तम मज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह प्रेगनेंसी मज रोल कर बचस कर अटैच विद द यूट्रीन वॉल यानी कर प्रेगनेंसी स्टार्ट तो लिहाजा कर HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनोट्रोपिन यह मेंटेन कर कार्पस ल्यूटियम फॉर द कंटिन्यूड secretion of प्रोजेस्टेरोन ज्यादा नेरान क्या प्रोजेस्टेरोन गस अगर अमिस प्रोजेस्टेरोन लेवल अमिस लेडी में डाउन गई तेल गमिस एबॉर्शन तेल गमिस यह प्रीमेचर डिलीवरी बच्चे गस ब्रोठे आउट 9 दो ब्रोठे गस बच्चे आउट तो मगर तमी प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा गमिस ओके तो नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज रिलैक्सिन करन इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ डिलीवरी रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा मज यह रिलैक्स कर प्यूबिक रीजन बर्थ कनाल वाइड गसान एंड द बेबी कम्स आउट तो लिहाजा कर चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे जनस मज मदद कर पार्चुलेशन मज मदद कर 4 हार्मोन कम प्लेसेंटा मज अब एस्ट्रोजन यह एनलार्ज कर यूट्रस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन कर मेंटेन प्रेगनेंसी HCG कर ह्यूमन कोरियानिक गोनोट्रोपिन यह मेंटेन कर कार्पस ल्यूटियम फॉर द कंटिन्यूड secretion of progesterone. रिलैक्सिन कर यह एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड तो यह इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ डिलीवरी मन रोल कर यह प्यूबिक रीजन कर क्या रिलैक्स तो बर्थ कनाल वाइडन गसान एंड द बेबी कम्स आउट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा ठीक एग्जाम पगह मैट्रिक लेवल मज व्हाट इज प्लेसेंटा व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग्स तो लिहाजा कर मे तुम मैट्रिक लेवल मज प्लेसेंटा ये 12th लेवल मज वो तत प्लेसेंटा तो बी पढ़ना खास कर पढ़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा दैट पार्ट यू विल स्टडी इन क्लास 12th ओके थैंक यू वेरी मच